So I'm going to give my talk on rejoice and be glad. It's Gaudate and Exultate, on the call to holiness in today's world. It's two themes: holiness, not in the past, not in the future, but in today. You know, our daily life. That's the main theme for today's talk. And then Gaudate Exultate is written and published in 2018. It's third apostolic exhortation Pope Francis. It's a recommendation of Pope Francis in the light of holiness and mysticism in daily life of lay people of God, which is my perspective. And maybe I mentioned the difference a little bit, difference between the faith and belief. It's not quite different, but there is. No belief or faith exists in vacuum. Rather, it must be contextual. Oh, sorry, I talked too much. I think we are supposed to be go one by one. Sorry. As you feel at home. Maybe we go back here. You go back. Yeah. Still back. Oh, okay. Okay. मोज़ेज़ सामीन, आज मिस्टर डॉक्टर पॉल के साथ हमारा तीसरा इजलास है और ये पोप फ्रांसिस के जो 4 बड़ी पापाई दस्तावेज़ात हैं उन पे है 4 इजलास। आज का जो तीसरा इजलास है इसका मौजू है खुशी करो और खुश हो। ये मत्ती के मुताबिक इंजील 5 बाब की 12 आयतें मुबारकबादियों के बाद से लिया गया है। तो इसमें पोप फ्रांसिस बताते हैं ये आज की दुनिया में दौरे हाजरा में ना माजी ना मुस्तकबिल दौरे हाजरा में तकद्दस के लिए पाकीज़गी के लिए जो बुलावा है उसके मुतालिक है जिसको आज डॉक्टर पॉल पेश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये गौदेते एट एक्सुल्टाते ये 19 मार्च 2018 में मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज शोहर की ईद के मौका पर पोप साहब ने जारी किया था। ये उनकी तीसरी पापाई नसीहत है पोप फ्रांसिस की और ये तकद्दस और तसव्वुफ रोजमर्रा जिंदगी में तकद्दस और तसव्वुफ की रोशनी में जो मोमिन खुदा के लोग हैं उनके मुतालिक है। यस नेक्स्ट। यस यहाँ डॉक्टर पॉल एक फर्क बता रहे हैं ईमान और अकीदे का। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी अकीदा या कोई भी ईमान खला में तो नहीं हो सकता, हवा फजा में तो नहीं हो सकता। ये इसको लाजमी मारूजी और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए जैसे हमारे हालात और हकायक है। यस पॉल, यू लेफ्ट फ्रॉम हियर। Okay. You can Yeah, a belief could be the close or expressions of faith and a part of faith itself. So the faith finds its expression in belief, and through the belief, people normally come to their faith. But it's not quite different one from another. Belief, on the other hand, is an intellectual, emotional, and cultural complement or embodiment of faith within the frame of a particular tradition, while faith is ever transcendent, unutterable, cannot describe with language, and open, limitless. Brother Asi? यहाँ डॉक्टर पॉल ईमान और अकीदों का फर्क बता रहे हैं कि जो अकीदे हैं वो ईमान का लिबास भी हो सकता है, ईमान का इजहार भी हो सकते हैं, या ईमान अपने इजहार को अकीदों में इजहार करता है। तो जैसे एक मिसाल उन्होंने दी है रसूलों के अकीदे में कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप पर और यीशु मसीह पर। तो ये
एक हर जगह मौजूद सच्चाई की हकीकत है, हम इस पर बाद में बातचीत करेंगे। तो आखिर में उन्होंने कहा है कि जो ईमान है या अकीदा है वो अकली भी हो सकता है, जज्बाती भी है, और इसमें सकाफती भी है, कुछ बेशुमार रवायात होती हैं ये। जबकि ईमान जो है, जो लफ्ज़ ईमान है, वो बईद और बाला है और नाकाबिले बयान है, और इसकी कोई हद नहीं है, इसकी ओपन फराख हदें हैं, कोई हद नहीं है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। तो आगे वो ईमान की दो किस्में बाइबल मुकद्दस में पाते हैं। यस पॉल। Okay, let me introduce the two type of faith in the Bible. Brother Asi? यहाँ ईमान की दो किस्मों का जिक्र किया जाएगा बाइबल मुकद्दस में। ईमान की दो किस्मों का, पहली यस Yeah, first, and it's inner conflict, the conflict inside of me and everybody, especially Saint Paul in Romans. जो पहला है वो है एक बातनी कश्मकश है, जो जिसका पौलुस रसूल भी इजहार करता है रोमियो के नाम खत उसके 7 बाब की 15 से 25 आयत तक, जिसको मैं अपने इमाल में नहीं समझता। पौलुस रसूल कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ कर नहीं पाता, जिसकी ख्वाहिश करता वो होता नहीं है। तो ये 15 आयत और 19 आयत में है। यस I just read for you only in blue. Paul said, I do not understand my own action, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do. Wretched man that I am, who will rescue me from this body of death? With my mind, I am a slave to the law of God, but with my flesh, I am a slave to the law of sin. ये उन्होंने रोमियो के नाम खत उसके 7 बाब की 15 से 25 आयत तक पढ़ा है, जो पौलुस रसूल के बातन में एक कश्मकश चल रही है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, और जो बदी है जिसको नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाती है। तो कितना मैं बदनसीब बदकिस्मत शख्स हूँ, मुझे इस बदन की मौत से कौन बचाएगा। तो वो ये हवाला आप लिख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, बहुत खूबसूरत हवाला है रोमियो के नाम खत 7 बाब की 15 से 25। यस और Suppose you are the same as Saint Paul. If you don't know yourself, if you don't know your strengths and limitations, your faith will not deepen and develop. Number two, even if you know yourself, it's useless if you don't reflect on the limits and try to overcome them. यस तो वो कह रहे हैं, फर्ज करें क्या आप मुकद्दस पौलुस रसूल की जगह पे हों, या जैसे पौलुस रसूल जिस बातनी कश्मश से गुजरा है उसी से आप गुजरे हों। यानी इसके मानी है कि अगर आप अपने आप को नहीं जानते, या अपने आप को जानते हैं, या आप अपनी कमजोरियों को नहीं जानते, या अपनी हदूद से लिमिट से वाकिफ नहीं है, तो आपका ईमान गहरा नहीं होगा और ना तरक्की करेगा, ना नशो हो पाएगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आप जानते भी हैं अपने आप को, तो ये इतना बेकार है, बेसूद है, अगर आप जब तक अपनी हदूद पे सोचते नहीं है और उन पे काबू पाने की कोशिश नहीं करते। अपनी कमजोरी को जानना भी इतना कारगर नहीं है जब तक उसको उस पे काबू पाने की आप कोशिश नहीं करते। यस पॉल। Yeah. Number three, when you try to overcome it, your human limit comes bigger, and you confess how miserable you are, like the Apostle Paul.
It's the moment when you collapse with so much despair. You feel it on a special occasions, but it is even more disastrous whenever you encounter such experience in daily life. Number four, then you must cling to God, crying, God have mercy on me. God will save me when I am hanging on to live. This is the moment when faith is put to the test. तो तीसरा नुक्ता ये है कि जब आप कोशिश करते हैं कि अपनी हदूद में गालिब आए, फतह पाएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी हदूद और ज्यादा बढ़ती जाती हैं और फिर आपको इतराफ करना पड़ता है, इकरार करना पड़ता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ, कितना बदबख्त हूँ, जैसे पलूस रसूल ने कहा। और ये वो वक्त है जब आप मायूसी में चले जाते हैं। ये कुछ सूफियाना और फलसफियाना ख्याल है कि जितना आप अपनी हदों को जानते हैं उतना वो हदें बढ़ती जाती हैं, यानी आप अपने आप को और बेबस महसूस करते हैं। तो ये कभी कभी खास मौक़ों पे भी हो सकता है और कभी कभी बहुत ही खतरनाक और मायूस कुन हो सकता है जब आप रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे किसी तजुर्बा से गुजरें। बाद में हम मिसालें देंगे फैमिली लाइफ की। चौथा नंबर है ऐसे हालात में जब आप मायूसी ज्यादा होती जाए, अपनी हदूद का ज्यादा इल्म होता जाए, फिर इंसान खुदा से चिमटता है, खुदा को पकड़ता है, खुदा को पुकारता है, इल्तिजा करता है कि आए खुदा मुझ पर रहम कर। तो खुदा बचाता है, खुदा निकालता है। जब भी मैं जिंदगी में अपनी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वो लम्हा है जब ईमान को आजमाइश में, इम्तिहान में पड़ता है। ये कोई मैं बाद में बताऊंगा जो बियाबान का तजर्बा था, कैसे इंसान की अपनी जिंदगी में जब उसके अंदर एक बियाबान पैदा होता है तो ईमान का इम्तिहान होता है, ईमान का टेस्ट होता है। यस बॉल। Mysticism in the Bible. I introduced another parable of a barren fig tree, Gospel Luke. So then he told this parable. He means, Jesus. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should he use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I will dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. ये जो दूसरी मिसाल है, पहली थी पलूस रसूल की, पलूस की बातनी कशमकश। ये जो दूसरी मिसाल है, ये है बाइबल मुकद्दस में तसव्वुफ, ये जो सूफियाना तसव्वुफ मिस्टिसिज्म, वो है बेफल अंजीर की तमसील। लूका के मुताबिक इंजील 13 बाब 6 से 9। तो इसमें 4 पॉइंट है, वो तमसील ही पढ़ी गई है कि 6ठे नंबर पे है यीशु मसीह ने ये तमसील कही कि एक इंसान ने, एक आदमी ने अंजीर का दरख्त लगाया, उसे बढ़ाया, लेकिन जब वो फल की तलाश में गया, ढूंढने गया, तो उसने उसमें फल ना पाया। तो उसने कहा, वो जो बागबान था जो इसकी हिफाजत करता था, कि 3 साल हो गए हैं, मैंने कभी इसमें कोई फल नहीं पाया, इसको काट डालो। ये क्यों जमीन भी मसरूफ रखे, किसी और कोई फल लगा लेंगे और कोई दरख्त लगा लेंगे। और नौकर ने कहा, जनाब 1 साल और दे दे, 1 साल और मौका दे, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसकी खुदाई करूंगा, इसकी खाद डालूंगा, और नेक्स्ट ईयर, अगले साल अगर इसका फल आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो काट देना। यस पॉल। How we could understand the parable? Traditional interpretation like this: God always gives a last chance in Jesus Christ, like expressed in this sentence. Sir,
leave it alone for one more year. Number two, it is criticism of the attitude of the owner, expecting fruit without trouble, without any labor. The Jesus who criticized the owner who does not care for the fig tree, but just wants the fruits. Like in expressed in this, sentence, I will dig around it and fertilize it, which needs a lot of labor. Father Asi? यस, ये इस तमसील को कैसे समझा जाए, वो बेफल अंजीर की तमसील को? एक तो रवायती तशरीह है, उसमें दो नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि खुदा हमेशा एक आखिरी मौका देता है यीशु मसीह में, जो इस बात के अंदर जाहिर होता है जब वो नौकर कहता है जनाब इसको 1 साल के लिए मौका दे, 1 साल के लिए और रखे। एक तशरीह है। दूसरी ये है कि इस तमसील में जो मालिक है उसके रवैये पे नुक्ताचीनी की गई है, तनकीद की गई है कि जो फल की ख्वाहिश तो रखता है लेकिन उसने काम नहीं किया, कोई मुश्किल मुसीबत नहीं उठाई। तो यीशु मसीह उस मालिक के रवैये पे तनकीद कर रहा है कि जो अंजीर के दरख्त की ध्यान तो नहीं रखता लेकिन फल चाहता है, सिर्फ फल चाहता है। और ये जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये इस फिक्रे के अंदर से बयान होती है जब वो नौकर कहता है कि मुझे 1 साल और दे, मैं इसके इर्द गिर्द खुदाई करूंगा, इसको खाद भी दूंगा, इसकी खिदमत सेवा करूंगा, फिर फल पाना। यस पॉल? Yeah, beside the traditional interpretation, we have another interpretation from Saint Teresa of Lisieux in a mystic way. Not only the text, the 3 years, but also until next year, and the repetitive act of digging and manure with the shovels itself is where self-transcendence occurs. ओके, तो एक दूसरी तशरीह ये है, वो जरा सूफियाना है, तसव्वुफ की तशरीह है। और ये तशरीह मुकस्सर ट्रीजा ऑफ लीज उसके गांव का नाम है फ्रांस में, तो क्योंकि ज्यादा ट्रीजा है इसलिए उनके गांव का भी नाम साथ लिखा है, सेंट ट्रीजा ऑफ लीज। ये कलीसिया की बहुत बड़ी सूफियाना मुकद्दस है। उन्होंने कहा है, ऐसे बयान किया है कि जो 3 साल तलावत में लिखे गए हैं कि 3 साल से ये फल नहीं लाया और अगले साल का जिक्र है, तो वो जो बार बार बताई गई है खुदाई का अमल और खाद देने का अमल, ये अपने आप से खुद गर्ज से होने से बाला होकर बैद होकर सोचने की बात है। ये सूफियाना तशरीह थोड़ी सी आगे जाके क्लियर हो जाएगी। जी, यस पॉल? Yes. Suggestions and Saint Teresa and Pope Francis and myself. Teresa's interpretations, not only the text 3 years, but also until next year. Yeah, I read it for you already. And it is the repetitive action in which the self-transcendence occur. What does that mean? That means emphasizing that the God's experience is not something special. It's not something different from everyday life. This shows us the mystery of daily life and the mystery of faith that experience God and become one with God. ओके, इस हिस्से में मुकद्दस त्रीजा की सुजेशन तजवीज और पोप फ्रांसिस की तजवीज और बाद में डॉक्टर पॉल की तजवीज भी आएगी। पहला मुकद्दस त्रीजा की तशरीह कि ये जो मतन के अंदर तलावत के अंदर लिखा है 3 साल से ये फल नहीं पा रहा, इस पे जोर है, लेकिन साथ साथ नेक्स्ट ईयर अगले साल बार बार आ रहा है कि मैं इसकी खुदाई करूंगा बेलचे के साथ और इसकी खाद पाऊंगा। तो ये यहाँ वो लम्हा है जब इंसान अपने मुतल्लिक और अपने से बैद होकर सोचता है कि इसमें
खुदा का एक्सपीरियंस जो है, खुदा का जो तजुर्बा है, वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से मुख्तलिफ नहीं है। यानी ईमान हमारी रोजमर्रा जिंदगी का जो भेद है, जो हम गुजारते हैं, हमारी मुआशरत है, और जो ईमान का भेद है और जो खुदा का भेद है, ये सारे एक है। हमारी मुआशरत में ही हमारे ईमान के तजुर्बात होते हैं। यस पॉल। Okay. Here is my reflection on this. What is mean by experience God and becoming one with God? What does it mean? Every moment in daily life, we could feel, smell, hear, touch many things, right? And including God, we could breathe and see God through everything we meet in the moment, no matter how small it is. The thing is that how deeply you feel God's presence through them is the way to become oneness with God. If then, या all right, can I continue? Number two, if प्लीज then, प्लीज how do you know that you are united with God as such? In other words, how do you know that such enlightenment is a self transcendence and authentic? It could be proved by your feelings of gratitude, joy, and humility. ओके, ये पहला मुकस्सा ट्रीजा की तशरीह थी। अब उस पे डॉक्टर पॉल के रिफ्लेक्शन है, बाद में पोप फ्रांसिस की तजवीज़ आएगी। तो डॉक्टर पॉल ने दो रिफ्लेक्शन दिए। पहला ये है कि इसके क्या मानी है कि मैं अपना ईमान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या खुदा का तजर्बा रोज़मर्रा की मुआशरत में कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा हम महसूस कर सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टच कर छू सकते हैं, हम जायका भी ले सकते हैं, हम खुदा को देख सकते हैं। यहाँ के तसव्वुफ जो हमारे सूफियाना लोग हैं कि वो जर्रे जर्रे में खुदा है, तो हम खुदा को देख सकते हैं, खुदा को पहचान सकते हैं। सब कुछ जो जिसकी हमें हर लम्हा मिलते हैं, खा वो कितने से कितना भी कमतर क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें खुदा का तजर्बा करते हैं, खुदा को सुनते हैं, देखते हैं। तो जो जो आप ये गहराई में महसूस करते हैं खुदा की मौजूदगी कि वो मेरे इर्द गिर्द है, मेरी मुआशरत में है, तो आप खुदा के साथ एक हो जाते हैं, एक महसूस करते हैं। दूसरा नुक्ता ये है, अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि हम खुदा के साथ मुतहिद हैं, कि हम कैसे जान सकते हैं, दूसरे लफ्जों में कि हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमें खुदा की तरफ से रोशनी मिली है, या जो मैं बात कर रहा हूँ कि खुदा मैं खुदा को देखता हूँ इर्द गिर्द अपने, ये वाकई मुस्तनिद है, मुतबिर है। और वो उन्होंने नतीजा निकाला है, ये इस बात से साबित होता है कि जब हमारे अंदर खुदा के लिए शुक्रगुजारी हो, ग्रेटिट्यूड, हमारे अंदर शादमानी हो, खुशी हो, जॉय, और हमारे अंदर हलीमी हो, फरोतनी हो, ह्यूमिलिटी खुदा के लिए, तब हम खुदा के तजर्बे को देख सकते हैं, जान सकते हैं। यस पॉल। Yes. Here is Pope Francis suggests, which is not a direct suggestion to the parable, but it has an indirect implication of the parable. Pope Francis said in his recommendation, Gaudate, Exultate, number 105, he said, the best way to identify whether our prayers are real is to look at how our lives have transformed into the light of mercy. He stressed on mercy here. तो पोप फ्रांसिस की तजवीज़ ये है कि कैसे हम खुदा का तजर्बा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि जब हमारी जिंदगियां रहम की रोशनी में तब्दील होती हैं, तो फिर हम खुदा का तजर्बा करते हैं। जितना हमारी जिंदगियों में गम खारी और रहम होगा, उतना ही हम खुदा का तजर्बा करेंगे, या जितना हम खुदा का तजर्बा करते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में कंपैशन एंड मर्सी, गम खारी और रहम बढ़ता है। और इस गम खारी को और रहम को जारी रहना चाहिए। यस पॉल।
Yes, Paul. Right. Yeah. Okay. The link to everyday mysticism in Laudato Si. There is a mystical meaning to be found in a leaf, in a mountain trail, in a dewdrop, in a poor person's face, which I already stressed when I dealt with the, Laudato Si, number 233. ये जो हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में तसव्वुफ, रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा की पहचान और खुदा का तजर्बा है, ये जो पिछले एतवार, पिछले से पिछले एतवार लौदातो सी तेरी तमजीद हो, पोप फ्रांसिस का दस्तावेजा, पपाई दस्तावेज उर्दू में हमने तर्जुमा भी किया है। उसमें उसके 233 में है कि हम खुदा को एक पत्ते में भी देख सकते हैं, हम खुदा को पहाड़ों में भी देख सकते हैं, हम खुदा को ये शबनम में भी, बूंदों में भी देख सकते हैं, और हम खुदा को एक गरीब इंसान में भी देख सकते हैं। यस पॉल। Yes. Pope, in the encyclical, Laudato Si, Pope Francis introduced Ali al-Khawaz, who is a Muslim poet and a Muslim thinker, who stressed from his own experience the need not to put too much distance between the creatures of the world and the interior experience of God. As he put it, prejudice should not have us criticize those who seek ecstasy in music or poetry. There is a subtle mystery in each of the movements and sounds of this world. The initiate will capture what is being said when the wind blows, the tree sways, the water flows, flies buzz, doors creak, birds sing, or in the sounds of strings or flutes, the sigh of the sick, the groans of the afflicted. पोप फ्रांसिस ने लौदातो सी तेरी तमजीद हो की दस्तावेज में एक रूहानी मुसन्निफ अली अल खवास का जिक्र किया और जोर दिया, जिनके लिए कि खुदा का तजर्बा करना ये ज्यादा फासले में नहीं है, तो ना हमें अलहदा करना चाहिए कि खुदा की मखलूक, दुनिया की तख्लीक और खुदा का बातनी तजर्बा, ये दोनों एक है, हम अलहदा नहीं कर सकते। कभी मैं खुदा का तजर्बा कर रहा हूँ, अभी मैं दुनिया की मखलूकात, कायनात देख रहा हूँ। तो वो अली ख्वास कहता है, अली अल ख्वास, कि सिर्फ वजद में, सिर्फ मौसीकी के जरिए या शायरी के जरिए वजद में आना ये नहीं काफी, हर लम्हा, तमाम लम्हात और तमाम सुरें और आवाजें इस दुनिया की, उन सब में खुदा का तजर्बा किया जा सकता है। उन्होंने ये शायरी अपनी, उनकी शायरी, अली अल ख्वास की शायरी दी कि हवा चलती है, दरख्त झूमते हैं, पानी बहता है, मक्खियां भिन बनाती हैं, और दरवाजों में जब बंद खोलते हैं वो जो आवाज आती है ची की, और परिंदे गाते हैं, और बांसुरी बजती है, या कोई तारदार साज बजता है, या बीमार की आहें, या दुखियों की दर्द, इन सब में हम खुदा को देखते हैं। यस पॉल। This is Saint Teresa Lisieux, who was a little flower that blooms in God's garden, and likes to call herself the toy of the baby Jesus. The small path to holiness becomes the way to accept all the everyday pain that comes from the communal life to Teresa. What is very crucial to me, the way she suggests to meet God is not like what Ali Alka was, the things we could meet at the daily life in a very positive way. Here, she suggests the way where we meet God in a little bit negative, because it's carry along her pains.
she died very much early, maybe in her 20s, but she accept all everything's in everything, including her pain. So all a daily opportunity to restrain the urge to judge and condemn colleagues further extend Teresa's patience and forgiveness. Of course, in a congregations like hers, also it's a human society, human community. There should be struggle, love and hate. Many things are going on. So that made her more closer to God. That's what she said. तो ये मुकद्दस ट्रीजा की तस्वीर है लीज की, ये जो फ्रांस में है। वो 24 साल की उम्र में, छोटी उम्र में वो वफात पा गई, लेकिन उन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़ी तकद्दस और बहुत बड़ी पाकीज़गी की जड़ें ढूंढी। उनको छोटा फूल भी कहा जाता है कि खुदा के बाग में वो छोटे फूल की मानद था, और वो खुद को अपने बच्चा यीशु के खिलौना कहती थी अपने आप को। उन्होंने ये पाकीज़गी और तकद्दस का छोटा रास्ता दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि हर रोज की रोजमर्रा जिंदगी की जो दुख दर्द है उन्हें कबूल करें, और जिस अंदाज से आप कबूल करते हैं वो ही आपकी रूहानियत के लिए आगे है। खासकर वो दुख दर्द जो मुआशरती जिंदगी से और खानदानी जिंदगी से आपको मिलती है। उन्होंने एक बात की कि हर रोज हमें बेशुमार मौके मिलते हैं कि हम फतवा, और हमारे अंदर ख्वाहिश होती है कि लोगों को फतवा दे, लोगों को बुरा भला करे, लोगों की नाकामियों की बात करे, लोगों की कमजोरियों की बात करे। उन्होंने कहा इनके बजाय हमें सब्र और मुआफी लेनी चाहिए। तो जितना अच्छे मानों में जितना इंसान में सब्र और मुआफी होगी, उतना ही वो खुदा का तजर्बा करेगा। और ये आप हम खानदानी जिंदगी में भी देख सकते हैं, एक दूसरे के बहन भाइयों के साथ, मियाँ बीवी के साथ जितना हम एतराज करेंगे, जितना हम नेगेटिव होंगे एक दूसरे के लिए, जितना फतवे देंगे, जितने दूसरे की कमजोरियां उछालेंगे, उससे नहीं, बल्कि जितना एक दूसरे के साथ सब्र के साथ और मुआफी में रहें, उतना खुदा का तजर्बा होता है। ये सिस्टर ट्रीजा ऑफ लीज ने कहा, जो 24 साल की उम्र में फौत हो गई, और उन्होंने छोटी उम्र में बड़े बड़े पाकीज़गी के तकद्दस के बहुत बड़े भेद लिखे हैं, वाजे किए हैं। सेंट ऑफ लीज। यस पॉल। Okay. Yeah, she's the Teresa, another Teresa of Avila. She's a very famous mystic. Teresa of Lisieux was named after Teresa of Avila and had this saint as a teacher. And at the age of 9, I'm here talking about Saint, Teresa of Lisieux. She's at the age of 9 longed for the Carmel monastery in Lisieux, France, and she wanted to, wanted to be accepted by the monastery itself at the age of 9, but she rejected the first time. But finally, she was admitted at the age of 15, which is also very early. तो ये ट्रीजा ऑफ आविला है। आविला भी एक फ्रांस में शहर का नाम है। तो ये इसकी जो टीचर थी वो दूसरी ट्रीजा जो पहले हम बात कर चुके हैं। तो ये इनको भी खुदा ने गिफ्ट दिया, खास नेमत बख्शी थी कि 9 साल की उम्र में ये कार्मल मोनेस्ट्री में लीज में शामिल होना चाहती थी फ्रांस में, लेकिन उन्होंने कहा बहुत छोटी हैं। फिर बिल आखिर 15 साल की उम्र में इसको शामिल कर लिया गया। ये चंद एक खवातीन हैं जिन्होंने कलीसिया में तसव्वुफ, ये सूफी मुक़द्दसीन हैं, ये तसव्वुफ का रूहानियत दी कि कैसे आप रोजमर्रा जिंदगी में, मुआशरत में, हर जगह पे अपने इर्द गिर्द खुदा का तजर्बा कर सकते हैं। यस पॉल। There's another church doctor among female saints, like a Saint Catherine of Siena.
she lived even more before than both the Teresa. Pope Paul VI canonized her as doctor of the church with Teresa of Avila. Among the church doctors, there are 4 women in total, including the 2, and Therese and Hildegard of Bingen. We have 4, only 4 of the female doctors. I think this is, I don't know if I'm mistaken. I forgot. Anyway, Saint Catherine of Siena was a laywoman, not sister or nun, but has been portrayed as if she was a nun like the one in the picture above. Do you know why? ओके ये जो तस्वीर है ये कैथरीन ऑफ सिएना की है। सिएना इटली में है, एक बहुत बड़ा शहर है, और ये वहाँ की रहने वाले थी। इसके बहुत बड़ा खानदान था, पता नहीं 11 बहन भाई थे, और ये अनपढ़ थी, लेकिन खुदा ने इसे रोया में बहुत सारी बातें की। ये बाद में डोमिनिकनों ने इसे ले लिया। तो इस तस्वीर में बेशक सिस्टरों का सर लिबास पहना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ले वुमन थी, आम खातून थी, अनपढ़ भी थी, और खुदा ने उसे वजद में ला के बहुत सारी बातें बताई। ये सिस्टर कैथरीन ऑफ सिएना, सिएना का शहर की है, और ये कलीसिया की तारीख में 36 मुअल्लिमीन हैं, डॉक्टर्स ऑफ द चर्च, और 4 उनमें खवातीन है। पॉल कहता सिर्फ 4 ही अभी, तो ये उनमें है। फिर ट्रीजा फाविला भी है, ट्रीजा भी है, और हिल्डेगार्ड ये जर्मनी की हैं, उनके गांव का नाम, शहर का नाम बिंगन है। ये जर्मनी के ये 4 खवातीन हैं जो कलीसिया की मुअल्लिमीन, उलामा कलीसिया, डॉक्टर्स ऑफ द चर्च है। यस, Okay. यस पॉल। Yeah. Do you know who are they? तो क्या आप जानते हैं ये कौन है? मुकस्सिर, Maybe different person or maybe the same one. How about this? Do you know who are they? आप जानते हैं ये कौन है? Maybe different person or same one. Do you know this? इनको जानते हैं जहाँ कर्सर है? Of course, it is Jesus Christ. How about this? वो Not तो familiar. ये हैं, तो ये जो काले बालों वाले हैं ये कौन है? All right. How about this now? अब अगली तस्वीर देखें तो ये कौन है, और इनमें से कौन सी शबी तस्वीर मुकद्दस अगस्टीन की जो असली हकीकी तस्वीर थी उसके करीब है? मुकद्दस अगस्टीन अफ्रीका के थे, हिप्पो अफ्रीका में है, वहां के बिशप थे। तो इन 2 तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर हकीकी असली मुकद्दस अगस्टीन से मिलती जुलती है, जैसा वो था, जैसा वो होगा? ये मुकद्दस अगस्टीन उधर लिखा हुआ है, वो हिप्पो के बिशप थे, हिप्पो अफ्रीका में है। Okay, you got a lot explanation from Father Asi, so I don't need to explain. But you please carry on. okay. Anyway, it's the picture, the same person, Saint Augustine. You see, but the one is look like curly hair and with like a Caucasian, with Westerner. But here is like African. You see, dark skin and. He's very much the hairstyles also, you see, like this, and it is all same person. It's Saint Augustine. Why do this different thing happen? Because still the colonizer power, imperial, the relics, the colonialism. And imperial power still influence much on our daily life, even Catholics, through this kind of image, right? This is a portrayal of Jesus Christ by Western people, which is very familiar with me, not only with me, but to you the same. How about the picture right side? Is the Jesus Christ portrait and
depicted by described by the supercomputer based on the fact, all the data. So what is the historically closer to the real image of God? I think image of Jesus Christ. I don't think it's this one. The right one is closer to the real image of God, according to the scientific, technology. यहाँ पॉल मुकद्सिन की तस्वीरों में फर्क बता रहा है कि मुकद्सिन जैसे जिंदगी में होते हैं, लेकिन जब वो मुकद्दस बन जाते हैं और फिर बड़े बड़े मगरबी आर्टिस्ट, इटली के आर्टिस्ट, किसी और मुल्क के आर्टिस्ट, मगरबी आर्टिस्ट उनकी तस्वीरें बनाते हैं, तो ऐसी खूबसूरत और ऐसी शाहाना और ऐसी बनाते हैं कि वो जैसे वो थे वो हमें नजर नहीं आता। तो उन्होंने मुकद्दस अगस्टिन की 2-3 तस्वीरें दिखाई हैं कि वो हकीकत में अफ्रीकन थे, उनके बाल, उनके चेहरे की रंगत, लेकिन जब वो यूरोप वाले या वेस्ट मगरब वाले तस्वीर बनाते हैं तो उनको ऐसा बनाते हैं कि वो लगता ही नहीं है मुकद्दस अगस्टिन। ऐसे ही यीशु मसीह की तस्वीरों में जो रियल हकीकी तौर पे थे, जैसे वो आम शख्स थे, वो यरूशलेम में नासरत में रहते फिरते थे, तो जब उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं इटालियन आर्ट में, तो बड़ी कोई माँ मरियम के मुतल्लिक भी ऐसे ही है। तो अगर कोई तीसरी दुनिया का मजदूर उसी यीशु मसीह की तस्वीर बनाएगा तो वो अपने अंदाज से बनाएगा। तो ये तस्वीर मुकद्दस अगस्टिन की और यीशु मसीह की दोनों की बताई है। वो बता पॉइंट ये रहे हैं जो पहले हमने देखे, कैथरीन ऑफ सिएना आम खातून थी लेकिन उसको सिस्टर का लिबास बना दिया, जैसे चर्च चाहता है, जैसे कलीसिया चाहती है कि वो लगे, तो ऐसा बना देते हैं। यस पॉल। Okay, so I want you to wrestle with this. Why the Christians? Why the Siena of the Catherine of Siena as a lay woman described look like nun or sisters? As I leave it to you as the homework. Please do homework. तो पॉल कह रहे हैं कि ये आपके लिए घर का काम है, तो आप थोड़ी सी जद्दोजहद करें कि एक जो अनपढ़ खातून थी, एक ले वुमन थी, आम औरत थी फैमिली लाइफ में आम, उसको क्यों उसकी तस्वीरों में सिस्टरों का लिबास बनाया गया? वो सिस्टर नहीं थी। और ये थोड़ा सा अपना जहन खोले कि ये कैसे होता है, हकीकत में जिंदगी क्या होती है, और फिर जब वो लोग मशहूर हो जाते हैं या लोग मुकद्दस हो जाते हैं तो फिर उनकी कैसे कैसे तस्वीर बनाई जाती है। ये वो कह रहे हैं आपको मैं घर का काम होमवर्क दे रहा हूँ, इस पे थोड़ी सी जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें कि कैसे तस्वीरें कई दफा हकीकत से हटके भी हो जाती है। जी यस पॉल। Okay, what I'm saying here is to say the very first sentence. No belief or faith exists in vacuum. Rather, it must be contextual, based on fact. उन्होंने फिर पहला स्लाइड दिखाया है जो उनकी बुनियादी वजह है कि कोई भी ईमान, कोई भी अकीदा ये फिजा में नहीं होता, जहां होता है इंसानों की मुआशरत में, इंसानों के दरमियान, इंसानों के माहौल में होता है, और माहौल के मुताबिक ही उसको लैंग्वेज, उसको जुबान और इजहार भी दिया जाता है। यस पॉल। Okay, all right, and then let's move on to yes. The experience of I cannot see the first sentence. Anyway, number one, do not be misled by words. Although I put too much on, much on the mysticism or mystery, but do not be misled by words such as mystery experience, or spirituality, so on. Spirituality or mysticism is not a particular area or a state of faith. The prayers of your daily life are mystery and spirituality. Okay, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि खुदा का तजुर्बा और रोजमर्रा जिंदगी में खुदा का तजुर्बा और तसव्वुफ का तजुर्बा। तो पहले वो नुक्ते में वो बता रहे हैं कि इनकी फिक्र ना करें, ना इन्हें गलत समझें। ये जो अल्फाज हैं भेद और भेद का तजुर्बा या रूहानियत या तसव्वुफ का तजुर्बा, बात मुख्तसर ये है
कि ये जो आप रोजमर्रा जिंदगी में दुआएं करते हैं वो ही भेद है और वो ही आपकी रूहानियत है। लफ्जों में ना जाए, जो भी आप रोजमर्रा जिंदगी में दुआएं करते हैं, माए बाप बहन भाई जो भी करते हैं, वो ही भेद है और वो ही रूहानियत है। यस पॉल। Yeah. Number two, here is the reason why spirituality has been emphasized much, because it was considered to be related to the inner dimension of faith, the mystical experience of God. This is due to the tendency to emphasize spirituality in the dualistic distinction between mind and body, and sacred and profane, secular and the body and the soul, and so on and so forth. Such a dualistic, distinction, division between the two. तो दूसरा ये है कि इसकी वजह क्या है, क्यों रूहानियत को ज्यादा जोर दिया जाता है, लफ्ज रूहानियत को। तो इसकी क्यों हम कहते हैं कि जो ईमान की अंदर का एक पहलू है वो, या खुदा का तसव्वुफ का तजर्बा, ये इस वजह से है, मैं पहले भी कई दफा मकतबे में बात कर किया है कि रूहानियत में एक दुई और दूरी, यानी दो अलग-अलग चीजें चर्च में तारीख में डाल दी गई कि जहन अकल फर्क है और बॉडी फर्क है, या रूह फर्क है और बॉडी फर्क है, बदन फर्क है, और जो रूह है वो रूहानियत है और जो बॉडी है वो दुनियावी है। ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो फर्क है, ये जो तकसीम है, इसने चर्च की तालीम को रूहानियत के मुतालिक मुतासर किया। तो आज हम महसूस करते हैं कि इंसान में बदन और रूह की तफरीक और फर्क नहीं है, दुई और दूरी नहीं है, वो एक इंसान है। यस पॉल, नंबर 3। Yes. Number three, faith is not simply reduced to an internal level, but a total of internal and external dimensions. The experience of God involves reason, head, emotion, our heart, and willingness, our body, encompassing behavior and changes in life. तो तीसरे नुक्ते में ईमान को सिर्फ बातनी म्यार नहीं दिया जा सकता, ये सब कुछ अंदर का, इंसान का कुछ अंदर का है, नहीं, लेकिन ये बातनी और खारजी दोनों पहलुओं को मिला के होता है। तो जो खुदा का तजर्बा जिसकी आज आप बात कर रहे हैं सूफियाना तसव्वुफ के लिहाज से, उसमें अकल भी है यानी सिर, उसमें जज्बात भी है यानी दिल, उसमें मर्जी भी है यानी बॉडी बदन, और ये सारा कुछ, हमारा सारा किरदार, हमारा सारा जो भी हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है, सब कुछ मिला के ये ईमान सिर्फ बातनी नहीं है, इंसान ईमान सिर्फ रूह का मामला नहीं है, सारी जिंदगी का, जज्बात का, मर्जी का, इंसान की मर्जी का, अकल का, सारा मिला जुला के पूरा जो इंसान बनता है उसका मामला है ईमान। यस पॉल। Yes. Yeah, because of the influence of Western philosophy, like Descartes, on Kant, on other, famous Western philosophers, only reason which judge, and but according to our tradition, Asian tradition, it is not only a reason or rational, but also feelings or emotion could have a judgment on everything, even the letter. I mean, the feeling or emotion have a more, correct judgment than reason itself. वो यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो रूहानियत है, ये ईमान पे सवाल करने का एक अमल है, और जो ईमान को अमल में लाने का एक अमल है कि जो जिस पे मैं ईमान लाता हूँ उसको अमल में भी लाऊं। तो जो कोई इंसान जो गहरी रूहानियत रखता है, वो इंसान होता है जो अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से और बड़े सब्र के साथ खुदा को अमल में लाए, जो खुदा कहता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, हकायक कितने भी मुश्किल हों। तो ये जो रूहानी शख्स है वो है जो ईमान को अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमें मुतात होना चाहिए जो इन दोनों को अलहदा करते हैं।
कि ईमान कोई और है, रूहानियत कुछ और है, वो गिरजे में होती है, दुआओं नमाजों में होती है, पारसाई के माल में होती है, और हमारी जिंदगी एक और मामला वो दुनियावी है। जो लोग इस तफरीक को या इन दोनों को अलग अलग करते हैं वो बहुत खतरनाक है। तो उनसे बचना भी चाहिए और मुताद भी रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक को जोर देता है, कोई दूसरे को जोर देता है, कोई दवाई को जोर देता है, कोई दुआ को जोर देता है। लेकिन आज का जो स्टडी है कि दोनों मिलजुल कर, बाहम दोनों मिलजुल कर इकट्ठी चलते हैं। यस पॉल। Yes. Number 4, spirituality is the power to Christian faith, the will to practice faith. A person with a deep spirituality is a person who has the will and power to practice God's will patiently, even though there are many difficulties in reality. A spiritual person is, after all, a person who tries to practice faith. Therefore, be careful of people who discriminate or differentiate from their daily lives by saying that we are deep in spirituality, or spiritual people who emphasize it too much. You know, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो मैं जल्दी में बता दिया जो कुछ भी पॉल ने बताया अभी चौथे नुक्ते में, कि ऐसे लोगों से खतरनाक ये खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए, जो अपने आप को ज्यादा ही रूहानियत या रूहानियत में गहरा कहते हैं। बात रूहानियत में गहरा होने की नहीं, बात प्रैक्टिस में, मामूल में, अमल में ईमान को दिखाने की बात हो रही है। यस पॉल। all right. Okay, now we a little bit dig on the rejoice and be glad, Gaudate and Exultate here. अभी हम अपने जो पोप पॉल का पोप फ्रांसिस का खाता है, पापाई दस्तावेज है, गौदेते एट एक्सुल्टाते, ये लतीनी में है। ये खुशी करो और खुश हो, ये मत्ती 5 बाब की 12 ऐसा उन्होंने टाइटल लिया है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। यस पॉल। Yes. The apostolic exhortation does not give theories about what constitutes holiness. Pope Francis offers the Beatitudes as the path to holiness. तो यहाँ इस पापाई दस्तावेज में कोई पोप साहब कोई असूल ज़ाब्ते पाकीज़गी के तकद्दस के ज़ाब्ते नहीं देते कि ऐसा करे तो पाक हो जाएंगे, बल्कि पोप फ्रांसिस मुबारकबादियां पेश करते हैं कि जो मुबारकबादियां हैं उन पे हम बाद में तफसील से बात करेंगे, वो ही पाकीज़गी का रास्ता है, वो ही तकद्दस की राह है। यस पॉल। Okay, I introduced 3 different verses, but they're the same. Jesus explained with great simplicity what it means to be holy when he gave us the Beatitudes. The Beatitudes are like a Christian's identity card, number 63. तो okay, go ahead. Yes, please. Please go ahead. तो डॉक्टर पॉल यहाँ 3 पॉइंट देंगे, 3 आयत के। यीशु मसीह ने बहुत सादगी से बताया कि पाकीज़गी तकद्दस क्या होता है, पाकीज़ा जिंदगी क्या होती है, और उन्होंने मुबारकबादियां दी। तो जो मुबारकबादियां हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे थोड़ी देर के बाद, वो मसीही शनाख्ती कार्ड है कि आप कितने मसीही लगते हैं और दूसरों के लिए आप कितने मसीही हैं। ये मुबारकबादियां पैमाना है, मुबारकबादियां एक शनाख्ती कार्ड है। यस पॉल। Yes, the word happy or blessed thus becomes a synonym for holy. It expresses the fact that those faithful to God and His Word by their self-giving gain true happiness. Number 64. तो यहाँ जो 2 लफ्ज है मुबारकबादियों में, एक मुबारक और एक खुश, तो ये जो ऐसा लगता है कि ये 2 लफ्ज ही पाक होना है। अगर आप पाकीज़गी देखना चाहते हैं, तकद्दस देखना चाहते हैं, तो देखें कि वो खुश कितना है और मुबारक कितना है। तो ये दोनों लफ्ज जो हैं ये इजहार करते, बयान करते हैं कि जो खुदा से वफादार हैं और उसके कलमे से वफादार हैं और अपनी खुद इनकारी करते हैं, खुद गर्जी से बाहर जाते हैं, खुद इनकारी करते हैं, वो
सच्ची खुशी पाते हैं। ये 66 नंबर है, गाउदेते एट एक्सुल्टाते, खुशी करो और खुश हो। यस पॉल। Yes. Each of the Beatitudes is an invitation to go against the flow, to go against the current, the typical type of life. तो हर मुबारकबादी एक दावत है कि हम बहाव के खिलाफ चले, बहाव के उलट चले, जैसे लोग करते हैं, जैसे रिवाज है, जैसे मुआशरा करता है, जैसे मामूल है लोगों का, उसके बरक्स चले। अगर हम उसी के साथ चलते हैं तो फिर हम रूहानी नहीं हो सकते। जैसे लोग मफादात के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए, बहुत सारी बातों के एक बहाव है। दूसरे रिश्वत लेते हैं तो मैं भी रिश्वत लेता हूँ, इसमें क्या नुकसान है। तो जो दुनिया का मामूल का मुआशरत का बहाव है, जिस तरह वो जा रही है, जो रवाज है, जो मामूल है, जो राइज है, उसके बरक्स चलना, उसके उलट चलना, ये मुबारकबादी है। यस यस पॉल। All right. Beatitudes. As you know, this famous the verse, Matthew chapter 5. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. And also here, verse 7, blessed are the merciful, for they will receive mercy. And verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Jump to the verse 12, rejoice and be glad. You see, this Gaudate, Exultate, exactly, taken from here, this, beatitude. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. So. ओके, ये मुबारकबादियां जो मत्ती के मुताबिक अंजीर उसके 5 बाब की 3 आयत से 12 आयत तक ली गई हैं। ये मैं बताता चलूं कि मत्ती 5 बाब, 6 बाब, 7 बाब ये पहाड़ी वाज है, 3 बाब, और पहाड़ी वाज का शुरू जो है वो मुबारकबादियों से होता है, तीसरी आयत से लेकर। तो यहाँ तीसरी आयत में, छठी आयत में ये सारी मुबारकबादियां दी गई हैं, 7वीं आयत में, 10वीं आयत में, 11वीं आयत में और 12वीं आयत में, सबसे आखिर में जो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां लिखा है खुशी करो और खुश हो, क्योंकि तुम्हारा अजर अजीम है, आसमान में तुम्हारा अजर अजीम है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले नबियों को भी इसी तरह इजाज़त दी थी। तो मुबारकबादियां आप जानते हैं, आप घर में भी जाके पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़िए एक बार फिर, क्योंकि अभी इसकी तशरीह होनी है। मत्ती 5 बाब 3 आयत से 12 आयत तक जो मुबारकबादियां हैं। जी, यस टू यू पॉल। Okay. It's a beatitude and Gaudate, Exultate. Jesus calls blessed those who are poor in the spirit. Wealth ensure nothing, he said. Spiritual poverty is bring us to a radiant interior freedom. It also calls for simplicity in life, being poor in heart, which is holiness. But a little bit, it's a too strong word. Wealth ensure nothing. But the wealth, as you know, could buy many things, even the quality of life itself. So I think you don't take it as literally, but here is a metaphorical manner is needed to interpret it in a correct way. यहाँ अभी मुबारक, सॉरी पॉल, सॉरी। No, Father Asi, your turn. ओके, यहाँ मुबारकबादियों को इस पापाई दस्तावेज में, जिसका नाम गौदेते है, एक्सुल्टाते है, कि खुशी करो और खुश हो, इसमें इस्तेमाल किया गया। कैसे पोप साहब इस्तेमाल करते हैं कि यीशु मसीह ने रूह के गरीबों की बात की और उन्होंने ऐसे जैसे कहा कि दौलत कुछ भी यकीन दहानी नहीं दे सकती, गो के रूहानी कि गो दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जिंदगी का म्यार भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ये एक इस्तारे के तौर पर, एक अलामती तौर पे बात की गई है। तो रूहानी गुर्बत
ही हमें रूहानी सादगी, रूहानी हलीमी, रूहानी फरोतनी ही हमें अंदर की आज़ादी देती है, बातनी आज़ादी। हम जब बातन में आज़ाद होते हैं तो किसी किस्म का कोई डर खौफ किसी का नहीं होता। इसको जिंदगी में सादगी, और एक और बहुत खूबसूरत लफ्ज है जिंदगी में कनात, कंटेंटमेंट, जो भी आपके पास है उससे इत्मीनान होना, मुतमिन होना। तो दिल के गरीब होना ये रूहानियत है, ये पाकीज़गी है, ये तकद्दुस है। यस पॉल। Yes. Number 2, there is no number. A person who sees things as they truly are and sympathizes with pain and sorrow is capable of touching life's depths and finding authentic happiness. Number 76, knowing how to mourn with others. That is holiness. वाह। तो एक इंसान, एक शख्स जो जिंदगी की हकीकतों को हकीकी तौर पे समझता है, लेप लपाव करके नहीं, उस पे मेकअप करके नहीं, उसको रंगने के लिए मुबालगा राय में नहीं, सिर्फ जो हकीकत को समझता है वो ही किसी के दुख में तसल्ली दे सकता है या हमदर्द बन सकता है, और वो ही इस काबिल है कि किसी के कर्म में, उसकी जिंदगी की गहराई के कर्म में छू सके। तो इस लिहाज से नंबर 76 में बताया गया है कि दूसरों के साथ कैसे रोना है, यही पाकीज़गी और यही तकद्दुस है। जो इंसान दूसरों के साथ रो सकता है, दूसरों का दुख अपने अंदर अपने आंसुओं में महसूस कर सकता है, वो ही पाकीज़ा है, वो ही तकद्दुस है, वो ही रूहानी शख्स है। बहुत खूबसूरत बात है। Yes, Paul. Yes. Hunger and thirst are intense experiences since they invert basic needs and our instinct for survival. There are those who desire justice and yearn for righteousness with a similar intensity. Jesus says that they will be satisfied, number 77, and therefore hungering and thirsting for righteousness, that is holiness. तो भूख लगनी और प्यास लगनी ये बड़े गहरे तजुर्बात है, क्योंकि इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं, क्योंकि इन पे हमारी बका है। जिंदगी मर सकती है अगर वो काफी देर के लिए भूखी और प्यासी रहे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंसाफ के प्यासे हैं, जो रास्ते के लिए भूखे हैं। तो यीशु मसीह ने ऐसे ही कहा है कि वो मुतमिन होंगे, उन्हें सब कुछ दिया जाएगा। ये पपाई दस्तावेज 77। और ऐसे है कि रास्ते के लिए भूख लगनी, रास्ते के लिए प्यासा होना, रास्ते के लिए भूखा होना, ये तकद्दुस है, ये पाकीज़गी है कि हर जगह पे मेरे घर में इंसाफ हो और रास्ते हो, जो सच है सच है, जो नहीं है। Yes, Paul. Okay. Mercy has two aspects. It involves giving, helping, and serving others, but it also includes forgiveness and understanding. Therefore, seeing and acting with mercy, that is holiness. तो रहम के दो पहलू हैं। रहम के दो पहलू हैं। एक तो है किसी को देना, किसी की मदद करना और किसी की खिदमत करना, किसी का हाथ पिटाना। लेकिन दूसरा पहलू है मुआफ करना और किसी की बात को समझना, किसी के दुख को समझना और मुआफ करना। तो नंबर 80 में 80 में ये पोप साहब की दस्तावेज का नंबर है। देखना, रहम के साथ देखना और अमल करना, किसी के दुख को, किसी की जरूरत को रहम के साथ देखना और अमल करना, ये ही पाकीज़गी है, ये ही तकद्दुस है। यस पॉल। Yes, in this way, Pope Francis paraphrased beatitude in the light of holiness or being holy. इस अंदाज से, इस पहलू से पोप ने अपने गौदेते एक्सुल्टाते, खुशी करो और खुश हो में तकद्दुस को, पाकीज़गी को बयान किया है और कलीसिया में जो
ज्यादा रूहानियत में अपने आप को ज्यादा थोड़ा सा आला तबके समझते हैं, उनकी बातचीत की है। यस पॉल। Okay. Like holiness, again, Gaudate, Exultate. यस Number 7, in their daily preservations, I see the holiness of the church militant, which is not a familiar word, the church militant. Very often, it is a holiness found in our next door neighbors. Remember, next door neighbors. We could find a holiness. Those who living in our midst reflect God's presence. We might call them the middle class of holiness. Interesting. Very often, it is a holiness found in our next door neighbors. Those who living in our midst reflect God's presence. We might call them the middle class of holiness. I'm sorry, I repeat, one more time, right? ओके, तो ये फिर वही बात है कि रूहानियत का अपनी रोजमर्रा मुआशरत में तजर्बा करना। हमारे पड़ोस में, हमारे गली में बहुत सारे रूहानी लोग हैं। वो लोग जो खुदा की मौजूदगी पर, रहम पर, खुदा की मोहब्बत पर गौर खोज करते हैं, सोचते हैं। तो ये पाकीज़गी का, तकद्दस का, मतवस्तब का भी इसे हम कह सकते हैं। यानी वो लोग, यहाँ बात जो हो रही है वो ये है कि जरूरी नहीं कि जो मजहबी अकीदत के पारसाई के अमाल हों उन्हीं को हम पाकीज़ा या तकद्दस या रूहानी कहें, बल्कि जो आम रोजमर्रा जिंदगी में खुदा की मौजूदगी पे गौर करते हैं वो भी रूहानी हैं। और ये हमारी गली में, हमारे पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इनको रूहानियत का मतवस्त तबका कहा गया है। जी, यस पॉल। Okay, what do you mean by church militants? Francis mentioned the phrase middle class of sainthood, not much in the sense of mediocre or middling, but in the sense of available to everyone. He also is seeking the church militant as a next door saints who do not compromise with the times in order to achieve full holiness and always move forward in their daily lives. तो पोप फ्रांसिस ने यहाँ एक रूहानियत के या मुकद्दस होने के मिडिल क्लास, मतवस्त तबके की बात की है। जो लोग रोजमर्रा जिंदगी में हमें मिलते हैं, शायद वो आला, हमारी नजरों में, हमारे म्यार में आला क्लास रूहानी तो नहीं है, लेकिन पोप फ्रांसिस ने कहा है वो लोग जो हर एक के लिए मदद के लिए तैयार होते हैं, हर एक के लिए रहम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हमारे करीब में, हमारे पड़ोस में, हमारे हमसाये में मुकद्दसीन लोग हैं जो शायद उनके पास वक्त नहीं है, या शायद वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फुल, जैसे कि कलीसिया में रिवाज है, वो तकद्दस और पाकीज़गी तो ना पा सके, लेकिन वो हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस पॉल। Gaudate Exultate gives a realistic and unromanticized view on the life of the saint. Not everything a saint says is completely faithful to the gospel. Not everything he or she does is authentic or perfect. What we need to contemplate is the wholeness of their life, their entire journey of growth in holiness. In number 22. तो यहाँ ये जो पोप साहब का दस्तावेज है, खुशी करो और खुश हो, उसके 22वें नंबर में पोप साहब देते हैं कि मुकद्दसीन की हालात जिंदगी के मुतल्लिक हमें ज्यादा रोमानवी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे लोग थे, वो पैदा ही ऐसे हुए, वो खेलते वक्त भी दुआ करते थे। ऐसा नहीं है, वो हमारी तरह आम इंसान थे, और ना ही हमें उनकी हर बात की तकलीद करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन जिस बात की जरूरत है वो ये है कि हम उनकी तमाम तर जिंदगी में, उनके तमाम तर पाकीज़गी में, और वो कैसे जिंदगी से बर्ताव करते थे अपने वक्त में, उस पे सोचे। और उनकी जो पूरा सफर था तकद्दस की नशो नुमा में,
उस पे कुछ ना कुछ सोचे और उसके कुछ ले। आम एक मुहावरा भी कहा जा सकता है कि मुकद्दस की तारीफ करना आसान है, उसके साथ गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत कई दफा बहुत खुद निकारी की जिंदगी गुजारते हैं। तो ये मुकद्दसों की रूहानियत को, तकद्दस को ज्यादा भी रोमांटिसाइज, ज्यादा भी रोमानवी अंदाज में बयान नहीं करना चाहिए। यस पॉल। Yeah, at a moment when some are telling Christians to detach themselves from the secular world, the document insists that holiness is possible in our ordinary circumstances. It does not require the creation of a special environment, but we have to remember that, once he said, you remember, we just write back a couple of slides before, he said, wealth ensure nothing. That means you should not attach to what is, wealth, what is the secular word. So detach yourself sometimes is okay, but it's don't discriminate, secular word from the being holiness. ओके, यहाँ एक बहुत खूबसूरत बताया गया है कि अगर वो आपको ये बताता है कि रूहानी होना दुनिया से अलग होना है, ये दुनियावी जो हालात हैं ये नहीं है ठीक। पोप साहब ने इस बात पे जोर दिया है कि रूहानी होना तो तब भी मुमकिन है अगर आप रोजमर्रा के मामूल के हालात में मुकद्दस हो। तो रूहानी होना और दुनियावी होना दो फर्क, अलग अलग बातें नहीं है। कोई भी इसको तकसीम करे वो अच्छा रवैया नहीं है। वैसे मैं बताऊं, हमारे यहाँ ये बहुत रवायती रूहानियत छाई हुई है कि जब हम मास्टर जी को, बाबू जी को देखते हैं, कैटेकिस्ट को देखते हैं, या फादर को देखते हैं, सिस्टर को देखते हैं, तो हम घरों में हमारे आते हैं तो हम रूहानी हो जाते हैं। और जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो हम कहते हैं ये दुनियावी बात है, फादर आके बंद करो। तो ये जो अलहदगी है ये बहुत खतरनाक है। पोप साहब कहते हैं जिन हालात में भी आप हैं, जिन रोजमर्रा के हालात में हैं, उसके अंदर ही रूहानी होना मुमकिन है। और इसको रूहानी होने के लिए खास एनवायरनमेंट, खास हालात बनाने की, तख्लीक करने की जरूरत नहीं है कि अब हम सारे ऐसा लिबास पहन लो, सारे चुप हो जो अब हम रूहानी बन गए। नहीं, रोटी पकाते, झाड़ू देते, घर में काम करते, कपड़े धोते, ये सारी जिंदगी के रोजमर्रा के अमाल के अंदर रूहानी होना और पाकीज़ा होना जरूरी है। यस पॉल। Yes. Yeah, Francis insists on the need for holiness in all parts of our daily life, including online or cyberspace. Christians okay. Yes, Paul. All right. Please. All right. पोप फ्रांसिस ने ये भी जोर दिया है कि हमारी जिंदगी के तमाम हिस्सों में, हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में, हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं में, उसमें ऑनलाइन भी डालो, साइबर स्पेसेस भी डालो, मीडिया भी डालो, जो कुछ भी डालो, उन सब में एक मुकद्दस जिंदगी, पाकीज़गी की जिंदगी गुजारना जरूरी है। ये नहीं कह सकते जैसे आजकल आम रिवाज है जी, ये मीडिया खराब है जी, बच्चों को खराब कर रहा है। नहीं, ये जिंदगी के साथ साथ है, इसके अंदर रह के भी इंसान को अपनी तकद्दस या अपनी पाकीज़गी की तरफ बढ़ना है आगे। यस, पोप फ्रांसिस ने इस पे जोर दिया है। यस पोप। Yeah, I think that is enough for the number 150. We skip beatitude and justice in Gaudate, Exultate. The beatitudes, the teachings of Jesus, going against the flow of the time, can be said to reveal Pope Francis' view of justice. The beatitudes are in no way tried easy to get or understanding, quite the opposite. We can only practice them if the Holy Spirit fills us with His power and frees us from our weakness, our selfishness, our complacency, and our pride. Number 65. ये जो टाइटल है Beatitudes and Justice in GA,
यानी इंसाफ और मुबारकबादियाँ और इंसाफ इन गौदेते ते एक्सुल्टाते, खुशी करो और खुश हो, उसमें ये नंबर 65 की बात हो रही है कि ये जो मुबारकबादियाँ हैं, यीशु मसीह की तालीम है जो कि वक्त के ज़माने के बहाव के बरक्स उलट चलना है। ये कहा जा सकता है, ये पोप फ्रांसिस का जो ख्याल है कि उसके इंसाफ के मुतालिक क्या नजरिया है, उसको बयान करता है। मसलन उन्होंने कहा कि मुबारकबादियां ये नहीं है कि कुछ चीज आसानी से मिल जाए या बगैर कोशिश किए, बल्कि मुबारकबादियां तब भी अमल में लाई जा सकती हैं जब रूल कुदस हमें हिदायत करे, रूल कुदस हमें मामूर करे और उसकी कुव्वत से और हमारी अंदर की जो कमजोरियां हैं वो हमें उससे दूर करे, उससे छुड़ाए, और हमारे अंदर जो खासकर खुद गर्जी है या मुफाद परस्ती है या गुरूर है, मगरूरी है, जब रूल कुदस इनको हमसे अलहदा करेगा, दूर करेगा, फिर ही हम मुबारकबादियों पर को मामूल में लाने और मुबारकबादियों पर अमल करने के काबिल हो सकते हैं। तो हम अकेले नहीं कर सकते। यस पॉल। Yes. He talked about, a relationship between the beatitude and righteousness. I read for you only in bold. In particular, those who cry for justice for their neighbors and communities, those who desperately desire justice and long for righteousness. तो इसमें वो जो मुबारकबादी है, मुबारक का जो रास्ते के सबब सिताए गए, उसकी बात की जा रही है, और बिलखुसूस पोप फ्रांसिस जस्टिस की इंसाफ की बात करते हैं, और खासकर वो जो इंसाफ के लिए चिल्ला रहे हैं, वो जो इंसाफ के लिए रो रहे हैं, हमारे पड़ोसी, हमारी बरादरियां, हमारी मुआशरते, और वो जो बड़ी मायूसी में इंसाफ की ख्वाहिश कर रहे हैं और वो जो रास्ते के लिए तमन्ना कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं, ये नंबर है 77 यस पॉल। Yes. To be persecuted for righteousness is sometimes to be ridiculed, hated, humiliated. In number 94. ये जो रास्ते के सब सबब सताए गए, इसके मानी बताए जा रहे हैं कि ये कभी कभी ये भी रास्ते के सबब मजाक उड़ाया जाता है, तमस्कुर उड़ाया जाता है, या रास्ते के सबब नफरत की जाती है, या रास्ते की वजह से पस्ती में धकेला जाता है। ये नंबर 94 में 94 में पोप साहब ने बताया है कि रास्ते के सबब सताए जाने के क्या क्या मानी है, क्या क्या हालतें। यस पोप। Yes. Thus. Okay. Yeah, it's Gaudate, Exultate. Thus, Francis' view on justice cannot be limited to one individual and extend to the entire planet, including neighbors and the societies. Francis' integral ecology, explained in the detail in his Be Praised, or rather the Sea, which stressed the cry of the poor is the cry of the earth, can also be said to penetrate at the perspective and attitude of justice. तो पोप फ्रांसिस का जो इंसाफ के बारे नजरिया है, वो सिर्फ एक एक फर्द की बात नहीं है, एक एक फर्द के लिए इंसाफ, बल्कि पोप फ्रांसिस तो सारे प्लेनेट के लिए, सारी धरती के लिए, आसमान और सारी कायनात, सारे माहौलियात के लिए बात करते हैं। तेरी तमजीद हो उस डॉक्यूमेंट में कि इंसान भी उसका हिस्सा है और सारे प्लेनेट में, सारी धरती पे, आसमान पे, जमीन पे, सारी जगह पे इंसाफ होना चाहिए। तो वहां लिखा है कि गरीबों की पुकार जमीन की, धरती की पुकार है। जब गरीब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं खुदा से, तो धरती चिल्ला रही है साथ ही उनके। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंसाफ का रवैया है, इंसाफ का पहलू है, इंसाफ का नुक्ता नजर है।
तो जो भी गरीबों की पुकार है वो धरती की पुकार है और उसमें उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। यस पॉल। Yes. Mysticism in Gaudate and Exultate. We believe that. There is one slide, justice and Yeah, mercy. I take off some slides, Father Okay, Asim. okay, Yeah, okay, not only that, but also maybe 3 or 4 slides, and contents also shortened. It's If you okay. carefully look at it again, and then yeah. We believe that Gaudite and Exultate presents mysticism of everyday life as a guide. Francis clearly states that this document is not a document on virtue and has no intention to explain the definition or concept of virtue, saying, my modest goal is to repropose the call to holiness in a practical way for our own time, with all its risks, challenges, and opportunities. Number 2, for your information, the word mystery appears 15 times, and the other relate to the words appear 12 times, like mysteries, 4 times, mysteries 2, mystic 2, mystical 2, mysteries 1, and mystics 1. So 27 times in total. ये जो अब हम बात करेंगे तसव्वुफ की, कि ये जो दस्तावेज है खुशी करो खुश हो, इसमें तसव्वुफ को कैसे देखा गया है। तो ये जो पपाई दस्तावेज है ये तसव्वुफ को रोजमर्रा जिंदगी में बयान करती है कि रोजमर्रा जिंदगी में तसव्वुफ हमारी एक हदायत है, हदायतनामा है। तो वो फ्रांसिस ने खुद कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट पपाई दस्तावेज मैंने लिखी है ये कुछ नेकियों पर हदायतनामा नहीं है, कैसे करे तो ये नेकी हो जाएगी, ऐसे करेंगे, ये मेरा इरादा, ये मेरी नीयत नहीं है। लेकिन मेरा जो हलीम एक सादा सा मकसद है वो ये है कि रोजमर्रा जिंदगी में पाकीज़ा, रोजमर्रा मामूल में पाकीज़ा जिंदगी गुजारना, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल तरह से पाकीज़ा जिंदगी गुजारना, वो हमारे अपने वक्त में तमाम खतरात के साथ, तमाम तकाज़ों के साथ, तमाम इम्कानात के साथ। ये नंबर 2 है। यहाँ लिखा है, ये डॉक्टर पॉल कह रहे हैं कि आपकी मालूमात के लिए जो लफ्ज भेद है ये 15 दफा इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किया गया है, और कुछ लफ्ज हैं इससे मिलते जुलते हैं, वो 12 बार हैं। मसलन मिस्टीरी पुर्राज 4 वक्त आया है, फिर भेद जमा में 2 दफा आया है, फिर सूफी 2 दफा आया है, फिर सूफियाना 2 दफा आया है, और फिर पुर्राज तरीके से 1 दफा आया है, और तसव्वुफ 1 दफा। इस तरह ये 27 बार इस दस्तावेज में आया है। इसका मतलब इस लफ्ज पे बहुत जोर है। यस पॉल। Okay, in Gaudate Exultate, I think Francis seemed to invite the possibility for entire people of God to be a mystic in daily life. ये Go ahead. या खुशी करो और खुश हो, गौदेते एक्सुल्टाते में पोप फ्रांसिस ने ये दावतनामा दी है कि इम्कान है, मौका है कि सारे खुदा के लोग रोजमर्रा जिंदगी में तसव्वुफ की जिंदगी, सूफियाना जिंदगी गुजारें, कि रोजमर्रा हर बात में खुदा की मौजूदगी को महसूस करें। तो ये एक अवामी तसव्वुफ है, अवाम में तसव्वुफ, और ये आपके पड़ोस में, आपके हमसाये में जो भी खुदा की मोहब्बत और रहमत पर सोचता है वो मुकद्दस है, खुदा की लिए जिंदगी गुजारना चाहता है, तो आपके पड़ोस में मुकद्दसीन है। ये एक अवामी, जिसको हमने एक दफा अपनी किताब में लोक रूहानियत कहा, अवामी तसव्वुफ है। यस पॉल। Okay, let's move to another one. Francis' mysticism of people in Evangelicarium. This time is Evangelicarium, not Gaudate Exultate. In Joy of the Gospel, Francis introduced theology of the people, called as soul of people.
and popular mystic as an analytical hub of popular culture from Latin America. The emphasis on the social dimension of salvation shows that the term sensus populi or popular spirituality are appropriate rather than the sensus fideium as a sum of individuals of religion or Christian believers. He uses populi or people as a concept that puts the poor economically at the center, but does not exclude the ordinary person as a whole. यस थोड़ी सी मैं बात बता चुका हूँ, अभी मैं आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है, ये जो अभी जिस पपाई दस्तावेज की बात करूं उसमें से नहीं है। ये अंजील की खुशी, द जॉय ऑफ द गॉस्पेल, उससे है कि पोप फ्रांसिस ने लोगों की थियोलॉजी, लोगों की इलाहियात को मुतारफ किया है, अवामी इलाहियात जिसमें मकबरावी भी काम करता है, कि ये ही लोगों की रूह है। ये जो अवामी तसव्वुफ है, ये ही लोगों की रूह है और ये ही लोगों का अवामी समझ है और अवामी लोक रूहानियत है। तो पोप फ्रांसिस आम शख्स को जो इक्तिसादी तौर पे गरीब है उसको भी मरकज में लाता है, उसको बाहर खारिज नहीं करता। कोई भी आम शख्स खारिज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है लोक रूहानियत का, लोक तसव्वुफ का, अवामी तसव्वुफ का, अवामी थियोलॉजी का, अवामी रूहानियत का। यस पॉल। Yes, this is what Francis says about evangelization and its relationship with the people in the joy of the gospel. The fullness of the gospel embraces scholars, workers, entrepreneurs, artists, and everyone. Capacity embraces the entire gospel in their own way and fosters the gospel in the expression of a prayer, brotherhood, justice, struggle, and festival number 37 to 37 in Evangelium. तो ये है, इसी माहौल में, इसी जुबान में पोप फ्रांसिस बशारत और उसके लोगों के साथ ताल्लुक आता है, उसकी बात कर रहा है कि बशारत सिर्फ मंबर से नहीं, मंबर का काम नहीं है, बशारत आम जिंदगी में भी है। और ये अंजील की खुशी के दस्तावेज में है कि जो बशारत की अंजील की भरपूरी है, उसमें आलम भी हैं, उसमें मजदूर भी हैं, जफाकश भी हैं, उसमें फनकार भी हैं, दस्तकार भी हैं और सारे हैं। और पाक अंजील की ये काबिलियत है, अहलियत है, कैपेसिटी है कि वो सबको अपने अंदर समाती है। खा वो दुआ का इजहार हो, खा वो अखुवत का इजहार हो, भाईचारा हो, खा वो इंसाफ का इजहार हो, खा वो जदोजहद का इजहार हो, या इकट्ठे ईदें मनाने का इजहार हो। यस पॉल। All right. Okay. Evangelium again. Francis says in the Joy of the Gospel that popular belief and the popular mysticism come from Apareshta documents. Apareshta is a General Assembly or Plenary Assembly or Latin American Bishops Conference 2007. The Apareshta document describes the riches which the Holy Spirit pours forth in popular piety by his gratuitous initiative. On that beloved continent where many Christians express their faith through popular piety, the bishops also refer to it as popular spirituality or people's mysticism. Number 240. ओके, यहाँ फिर इंजील की खुशी की बात ही कर रहे हैं। वो जो पोप साहब का पहला दस्तावेज है, उसमें बताया गया है कि ये जो अवामी तसव्वुफ की बात है और अवामी अकायद की बात है, ये अपने सीधा डॉक्यूमेंट से आता है। लातीनी अमेरिका में जो बिशप कॉन्फ्रेंस है 2007 में इस मुकाम पर हुई थी, इस शहर में हुई थी, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट निकाला था उस शहर के नाम में
अप्रसीदा डॉक्यूमेंट। ये बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट है लिबरेशन थियोलॉजी के लिए और थियोलॉजी के लिए। और जो लातीनी अमेरिका की बिशप कॉन्फ्रेंस है उन्हें सैलम कहते हैं, CELAM, जैसे एशिया की FABC होती है, उनका जो डॉक्यूमेंट है 2007 का। तो वहां से अवामी पारसाई की बातें आई, अवामी रूहानियत की बातें आई, लोगों का तसव्वुफ, अवामी तसव्वुफ की बातें आई, जो पोप साहब ने अंजील की खुशी में 124 नंबर में इस्तेमाल किया है। यस पॉल। Okay, what should be noted here is that the people he's talking about do not only mean the people at grassroots, but also the whole ordinary people in general. Therefore, this mystery mystery of the people's mysticism, this mystery becomes a new socio-cultural place of the theology because we live and learn with these ordinary people. Francis emphasized that underlying popular piety as a fruit of the inculturated gospel is an active evangelizing power which we must not underestimate. To do so would be to fail to recognize the work of the Holy Spirit. 126. तो इसी डॉक्यूमेंट में इंजील की खुशी में 126 पैराग्राफ में पोप फ्रांसिस लिखते हैं कि हमें इस पे गौर करना चाहिए कि जब वो अवाम की बात करते हैं तो सिर्फ ये गरीब लोगों की और जो बहुत ही नीचे के लोग उनकी नहीं, इसमें सारे आम शख्स शामिल है, सारे। तो ये जो भेद है ये हमारी मुआशरत और सकाफत में और हमारी मुआशरत और सकाफत की थियोलॉजी इलाहियात में सामने आता है, जो हम गुजारते हैं, बसर करते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन अवाम, आम लोगों के साथ, रोजमर्रा के अवाम के साथ, तो पोप फ्रांसिस ने इस पे जोर दिया है कि अवामी पारसाई, ये जब हम अपनी यीशु मसीह की इंजील को अपने सकाफत में लेते हैं, अपनी मुआशरत में लेते हैं, तो उसका फल है। अवामी पारसाई वहां से आती है जब हम अपने इंजील को अपनी मुआशरत में और सकाफत में लेते हैं। तो ये ही एक अमली और फ़ाल बिशारती अमल है, एक ताकत है, और ये रूल कुदस के काम और रूल कुदस की मदद को तस्लीम किए बगैर नहीं हो सकता। अगर हम उसको पाकरू की काम को और पाकरू को तस्लीम ना करें, कबूल ना करें, उसका इकरार ना करें, तो उसके बगैर नहीं हो सकता अगर हम पाकरू के अमल को नजरअंदाज करें। यस पॉल। Okay, now conclusion: holiness, beatitude, and mysticism in Gaudate Exultate. Yeah, The background. Okay, all right. Yeah, please. Yeah, in the background of the Beatitude and the chapter 3, which Francis proposed using him as his master teacher's light, his mystical eye continues to influence the spirituality of chapter 5, which is the conclusion, and is still deep in his awakening. Without putting mysticism at the forefront, Francis responds to the call of successful virtue and urges him to firmly rely on Jesus' mysticism as the core of his faith in living as a waking believer. Holiness on daily basis today, therefore, number one, joy and a sense of humor. Number two, not individualistic, but a singular communal wisdom. Number three, in constant prayer and contemplation. Number four, patience and meekness. Number five, boldness and passion. Okay, नतीजे में पोप फ्रांसिस ने 3 बातों पे जोर दिया सारे दस्तावेज का नतीजा निकालते हुए। पाकीज़गी, तकद्दुस, दूसरा मुबारकबादी, और तीसरा मिस्टिसिज्म, ये तसव्वुफ। तो पोप फ्रांसिस ने तीसरे बाब में मुबारकबादियों के पस मंजर लेकर उन्होंने कहा है कि जो यीशु मसीह की रोशनी है, यीशु मसीह का नूर है, यीशु मसीह की मिसाल है,
उसकी पैरवी करें और उनकी जो तसव्वुफ वाली चीज़ों को देखने का अंदाज है उसको देखें और वो हमारी रूहानियत को मुतासर करेगा। तो यही नतीजा इस डॉक्यूमेंट का कि बजाय कि हम तसव्वुफ को एक बड़ा आला सा और बहुत ही नामुमकिन सा नाकाबिले हसूल एक पॉइंट रखें, बल्कि ऐसा जो कि हमारी हर रोज जिंदगी में हमें नेकियां करने में तहरीक दे, उभारे। और ये हमारे ईमान का दिल होना चाहिए और इससे ईमान उभरना चाहिए। और फिर एंड पे आखिर पे उन्होंने कहा कि रोजमर्रा जिंदगी में जिंदगी की बुनियाद में तकद्दस और पाकीज़गी क्या है। 5 पॉइंट दिए। पहला, एक तो खुश होना, और दूसरा मिजाज का मिजाज रखना, यानी जो गुस्से वाले शख्स हों, मैं पंजाबी में एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुंह वटे, वो तकद्दस नहीं हो सकते, वो पकीज़ा नहीं हो सकते। खुशी होनी चाहिए, कुछ पाक अंजील के अमल करने पे खुशी होनी चाहिए। कुछ है हमारे रास्तबाज जो बहुत ही कड़वे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं और उनमें कोई मिजाज नहीं होता। दूसरा पॉइंट, इनफरादी नहीं होना चाहिए कि मेरी निजात मैं नहीं, बल्कि सबको मिलाकर, माशरे में सारे को मिलाकर, सबकी मिलाकर एक होना चाहिए। तीसरा है लगातार और मुसलसल दुआ और गौर खौज। और चौथा है सब्र और नरम दिली। ये रोजमर्रा जिंदगी में हमारे ताल्लुकात में, हमसायों के साथ, घर में बहन भाइयों के साथ, मियाँ बीवी के साथ। और पांचवा है जुर्रत, दिलेरी और जज्बा। ये हैं 5 नुक्ते जो हमें हर रोजमर्रा की जिंदगी में तकद्दुस और पाकीज़गी और तसव्वुफ की तरफ लेके जा सकते हैं। यस पॉल। All right. Next question for group discussion. Number 1, what is your understanding of holiness in the document? Can you make a connection between your faith in God and holiness? Number 2, what is your... All right. यहाँ सवाल दिए जा रहे हैं, मैं मेहरबानी से मैं दोहराऊंगा, आप जरूर लिखें। जब आप ग्रुपों में जाएंगे तो ये सवाल आपने इनका जवाब ढूंढना है, तो अपनी अपनी शख्सी जिंदगी में मेहरबानी से ये लिख लें कि इस पापाई दस्तावेज जिसकी हमने स्टडी किया है, खुशी करो और खुश हो, ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज तकद्दस को, पाकीज़गी को कैसे समझता है और आपकी इसके मतलब क्या समझ है। इसी सवाल का दूसरा जुज है कि क्या आप अपने ईमान में, खुदा में, अपने ईमान में और तकद्दस के साथ कोई रिश्ता ताल्लुक बना सकते हैं, कोई जोड़ सकते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ। पहला सवाल, 2 जुज हैं। पहला जुज है कि इस पापाई दस्तावेज के अंदर जो तकद्दुस और पाकीज़गी की समझ है वो आपने कैसे समझी है, आपकी क्या समझ है पाकीज़गी के मुतालिक। जुज 2 बी के क्या आप अपने ईमान में जो खुदा पर रखते हैं और तकद्दस पे, क्या उसका कोई कनेक्शन बना सकते हैं, ताल्लुक दिखाई देता है। यस पॉल। Okay, number 2, what is your understanding of mysticism? Can you make it a practical mysticism by finding God in you and everything in your daily life? Remember what Ali Al-Khawas, was talking about. You found God in wind blows and so on and so forth. तो दूसरा सवाल ये है, इसके भी 2 जुज हैं, सिर्फ मैं जुज बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, कि आपका तसव्वुफ के बारे में क्या ख्याल है, तसव्वुफ के बारे में आपकी समझ क्या है। और उसका 7 वाला जुज है कि क्या आप तसव्वुफ को रोजमर्रा जिंदगी में, यानी खुदा को ढूंढने और खुदा की तलाश करने और उसकी मौजूदगी को महसूस करने में अमली बना सकते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। और उन्होंने आगे बताया कि अली अल खवास जो अरबी शायर है, उसके अल्फाज याद रखें, जिन्होंने कहा कि चलती हवाओं में और ये हिलते जुलते दरख्तों में और बहते पानियों में
और मक्खियों की भिनभिनाहट में और दरवाजे की हल्की सी शोर में और परिंदों के गानों में और बहुत सारे लोगों में हम खुदा की मौजूदगी को देख सकते हैं। ये अमली तसव्वुफ है। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ये सवाल है 2। यस पॉल।